Hi people, very good evening. Can you all see me? Am I audible to all of you? Please let me know. Please reply quickly so that I can see you all. Please reply in the comment box, people. Okay, great. Okay, wonderful. So people, we are good to go. And today, this session is on vocabulary, something people always wanted. People, लोगों ने मुझसे कहा कि सर vocabulary की तैयारी कैसे करें? Vocabulary हमसे होती नहीं है, क्या करें, कैसे किया जाए? तो आई थॉट दैट लेट मी टेक अ सेशन ऑन वोकेबलरी और उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा मैं एज टू हाउ टू कि वोकेबलरी की तैयारी कैसे करनी है और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं. बट सी पीपल, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड that vocabulary is tested primarily in many of the non-CAT exams. आप ये बोलेंगे सर क्या CAT में vocabulary important नहीं है? ऐसा नहीं कि CAT में vocabulary important नहीं है. If you look at vocabulary, it has its application. I mean, if you read the RCs, the parajumbles, the summary, vocabulary का कहीं ना कहीं कोई ना कोई role तो होता है, because if you know the meaning of the word, you will understand the word in a better way, right? So it's good to have the knowledge of the word and the right meaning of the word. Also, it is good to be smart enough to draw the meaning from the context. देखो context से meaning निकालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द वर्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. तो कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उससे आप क्या कर सकते हैं ना कि कोई भी वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं. तो वेन एवर आई रीड द आरसीज आई टेल किया देखो इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालने की कोशिश करो. आप अगर कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकलता है तो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू. ठीक है. सो कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे पीपल. ऑल ऑफ यू कैन सी द पीडीएफ दैट आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन. सबको दिख रहा होगा ना? ठीक है. सो यू कैन सी ऑल द पीडीएफ हियर. आई होप एवरीवन कैन सी द पीडीएफ. क्या कह रहा है ये कि देयर आर 20 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. ईच क्वेश्चन हैज अ वर्ड फॉलोड बाय 5 चॉइसेस. देखो पीपल, जैसे जैसे कि मैं वर्ड आपको देते जा रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप नोट डाउन भी करें. कोई भी वर्ड आपको लगता है कि यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो आप उसको नोट डाउन कर ले, उसका मीनिंग भी आप साइड में लिख लें. लिखने से बहुत फर्क पड़ता है पीपल. सी इफ यू राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द चांसेस आर दैट द वर्ड विल रिमेन इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ठीक है. एटलीस्ट उसका इफेक्ट आपको थोड़ा और लंबा दिखेगा इन कंपैरिजन टू सिंपली लिसनिंग और वॉचिंग द वर्ड. ठीक है. सो एक 20 क्वेश्चंस की लिस्ट लाया हूं मैं. बहुत कम क्वेश्चंस हैं. आज सेशन थोड़ा छोटा रखूंगा. इट इज द फर्स्ट सेशन आई एम टेकिंग लाइव ऑन यूट्यूब आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. मैंने कभी ऐसा लाइव लिया नहीं है. तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इसको मैं 30, 40, 50 भी कर दूंगा. बट लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल पीस. ठीक है. सो प्लीज बी पार्टिसिपेटिव. रिप्लाई करें, आंसर करें, और प्लीज ट्राई टू ऑल्सो गिव द सिनोनिम एंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड. कि कोई भी वर्ड का अगर सपोज कोई भी वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम वगैरह है वो भी आप जरा शेयर कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. सो देयर इज द मीनिंग हियर. द फर्स्ट वर्ड दैट यू सी हियर ऑन द स्क्रीन इज द वर्ड प्रोलॉग. तो प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रो तो होता है जो मतलब इन फेवर ऑफ समथिंग, वो भी एक मीनिंग होता है प्रो का. बट प्रोलॉग वो होता है जो चीज पहले आती है. सो कोई भी किताब के पहले आप देखोगे कि द ऑथर राइट्स द प्रोलॉग और द इंट्रोडक्टरी नोट टू समथिंग. सो प्रोलॉग इज व्हाट? प्रोलॉग इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू समथिंग. उसे बोलते हैं प्रोलॉग. So prologue, if prologue is the introduction to something, then which word do you think is most opposite to the given word at the top? सबसे इसके opposite कौन सा होगा? Soliloquy, trilogy, analog, dialogue, या epilogue? So this question is very easy, people. It can be quickly marked. I know the answer is epilogue. You all know that the answer is epilogue. Epilogue क्या होता है? Some sort of a conclusion. तो आप जब बुक के एंड में कुछ लिखते हो, जस्ट एज अ सॉर्ट ऑफ एडिशनल थिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड, वो बन जाता है एपिलॉग. और जो शुरू में आता है वो होता है प्रोलॉग. सो प्रोलॉग इज द इंट्रोडक्शन एंड एपिलॉग इज सॉर्ट ऑफ एडिशन और कंक्लूजन दैट कम टुवर्ड्स द एंड. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपिलॉग एंड प्रोलॉग. सो प्रो मतलब पहले, right, in support of. So pro means the one that comes first, epilogue means the one that comes in the end. Now there is one word which is soliloquy. You should know the meaning of the word. What is soliloquy? Now if you look at the word loq का मतलब होता है, see, I will give you certain techniques by which you can remember the word for a longer time. So here we have the word loq.
तो ये जो लॉकी होती है, LOQUY, ये बहुत सारे वर्ड में आता है, ये लॉक्वी करके, सोलिलॉक्वी, कॉलिक्वियल एंड लोक्वेशियस, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसमें लोक्वा आता है। तो लोक्वा जो है, दिस लोक्वा इज अ रूट, रूट मीन्स a sort of word which gives you the root of the word. So loqua is added to lots of words. It's a root word and it means speech. लोक्वा का मतलब क्या होता है? स्पीच, बोलना, ठीक है। तो अगर लोक्वेशियस कोई होता है, लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है। सो लोक्वा मीन्स स्पीच एंड इफ यू आर लोक्वेशियस यू आर टॉकिंग टू मच। वर्बोजिटी भी एक वर्ड होता है, लोग बोलते हैं सर इज दिस वर्बोज। वर्बोज मीन्स नॉट टॉकिंग टू मच बट टेकिंग टू मेनी वर्ड्स। मैंने आपसे किसी चीज को एक्सप्लेन करने बोला, आपने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए, उसको बोलते हैं वर्बोजिटी, ठीक है। लोक्वेसिटी मीन्स टॉकिंग टू मच अननेसेसरीली। सो लोक्वा का वर्ड जो है वो बन जाता है लोक्वेशियस एंड लोक्वा यहां पर आया है सोलिलोक्वी, राइट, खुद से बात करना। सोली में क्या आता है? सोलो, सोलो प्लस लोक्वी, तो सोलो मीन्स अकेले, राइट, लोक्वी मीन्स बात करना, खुद से अकेले बात करने को हम बोलते हैं सोलिलोक्वी। आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी वर्ड दैट यू थिंक इज वेरी क्लोज टू दिस और इफ यू वांट टू रिमाइंड मी द मीनिंग क्या है उसका, तो भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन टेक द सेकेंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिसआर्म। द वर्ड डिसआर्म जो है उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? यस पीपल प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसआर्म। डिसआर्म क्या हो सकता है? डिसआर्म है ना, disarm, ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक एट द वर्ड disarm, द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्म, आर्म का मतलब होता है, ऑफ कोर्स ये तो एक आर्म्स होता है, मेरे आर्म्स आपको दिख रहे होंगे। एक होता है कि टू आर्म, आर्म्ड मैन एंटर दी, आर्म्ड मैन, ठीक है, ये आपने देखा होगा, आर्म्ड मैन एंटर्ड द बैंक, ठीक है। तो आर्म्ड मैन का मतलब क्या होता है? आर्म्ड मैन का मतलब होता है हथियार, द पीपल हु हैव गॉट वेपन्स विद देम। So armed men means weapons. It could be any weapon. It could be a sword, it could be a pistol, it could be anything. So armed men means people who are having some sort of weapons. तो इसका opposite क्या होगा फिर? Armed man का opposite challenge, opposite तो नहीं होगा because armed means you are already having a weapon, तो challenge तो उसका opposite नहीं होगा, entertain भी नहीं होगा, instruct भी नहीं होगा, in fact put on guard, ठीक है। अब देखो कैसे आता है, armed men मतलब लोगों ने वेपन्स कैरी किए हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन अलर्ट। डिसआर्म का मतलब क्या होता है? टू टू बेसिकली बिफ्रेंड समवन, ठीक है। जैसे भाई समवन इज वेरी एंग्री एट यू एंड ही इज विलिंग टू क्वारल, बट आपने स्माइल दिया उसको, स्माइल देके आपने कहा आई एम सॉरी, तो कैन आई से बाय डूइंग दिस यू हैव डिसआर्म्ड समवन। सो आर्म्ड मीन्स व्हाट? रेडी टू फाइट, कैरिंग वेपन्स। डिसआर्म मीन्स टू बिफ्रेंड, to basically make someone less hostile. So disarm, if I want to give you the exact meaning of the word disarm, disarm means to make, ठीक है, to make someone or anyone, to make someone less hostile, not hostile, less hostile, to make someone friendly. किसी के मन से वो बैर को निकलवा के फेंक देना, उसको बोलते हैं disarm. So your enemy comes with a sword in his arm, you embrace him and say sorry and smile, that might disarm the enemy, ठीक है। So disarm means to befriend and the opposite is to put on guard. ऑन गार्ड का मतलब देखो, ऑन गार्ड इज ऑल्सो एन ईडियम, ये कई बार आपको एनमैट स्नैप वगैरह में आएगा। व्हेन समवन इज ऑन गार्ड, इसका मतलब वो अलर्ट है। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, बेटा आप लोग कैट लिखने वाले हो, सो ऑलवेज बी ऑन गार्ड। बी ऑन गार्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी अलर्टनेस, आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग बिकॉज द पैड इज नॉट इन राइट शेप, बट इफ यू आर ऑन गार्ड, सो व्हेन आई से बी ऑन गार्ड, इट मीन्स बी अलर्ट, बी आर्म्ड, बी रेडी। एंड व्हेन आई से that disarm means चलो यार भूल जाओ सब कुछ, just relax, ठीक है। So I hope the meaning is clear to everyone. Armed means carrying weapons, disarmed means not carrying weapons, not hostile, friendly even to some extent, ठीक है। So this clears the word disarm. आगे बढ़ते हैं, easy easy questions आ रहे हैं, questions difficulty बढ़ने वाले। Inflate, inflation you all know, right? In fact, in and X are, these are the two words that you have to keep in mind. For example, एक word है exhibition, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि exhibit का मतलब क्या होता है? दिखाने के लिए। exhibition मतलब, exhibition क्या होता है? exhibition में आप अपने paintings, अपने arts को दिखाते हैं, right? तो exhibition is the place where you show your skills, right? So if I have to put the opposite of exhibition, it is inhibition, ठीक है।
समझ में आया सबको? तो यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे एक्स हो रहा है. दे आर समवॉट ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. सो एक्सबिशन मीन्स टू शो, इनहिबिशन मीन्स दबा के रखना, अपने इच्छाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाना. So to exhibit your emotions means to show your emotions. To inhibit means to suppress. तो अगर inflate का ऑपोजिट पूछूं तो क्या हो सकता है? इन्फ्लेट मतलब बड़ा करके, है ना. इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब करेंसी और मनी की जो है वो मतलब वैल्यू कम होती जा रही है, राइट. सो इन्फ्लेट मीन्स टू दी बी स्कूल्स दे इन्फ्लेट देयर सैलरीज, राइट. सो अगर सैलरी ऑन एन एवरेज सपोज 15-16 lakhs पर एनम है तो उसको बोलेंगे 20 और 22 लाख. तो कैन आई से द सैलरीज हैव बीन इन्फ्लेटेड. तो अगर इन्फ्लेट उस तरह से है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा. सो मेनी पीपल विल मेक द मिस्टेक इन द एग्जाम. दे विल फील दैट बिकॉज इट हैज द वर्ड इन, बिकॉज इट हैज द वर्ड इन, दे वुड कॉल इट एज synonyms. बट ये दिखते सिनोनिम है, ये सिनोनिम है नहीं. इन्फ्लेट मीन्स टू मेक समथिंग बिगर and inhibit means to suppress something. Inhibition is suppression, inflation is making something bigger. That's the reason why the word inhibit is the exact opposite of the word inflate. I mean the most opposite, I would say, not the exact opposite. ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पीपल की समटाइम्स द वर्ड्स आर इजी बट बिकॉज वी आर इन अ रश टू मार्क द आंसर गड़बड़ कर देते हैं हम लोग. ठीक है. इनहिबिशंस मींस अपने फीलिंग्स इमोशंस को दबा के रखना, जाहिर ना करना. ठीक है. दैट इज समथिंग आई विल ऑलवेज यूज हिंदी सो दैट इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर अ वर्ड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चलो आई विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड. एक मिनट. क्या दिया हुआ है? इंडिजिनस. नाउ अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड. ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड है कि याद नहीं होगा. इंडिजिनस का मतलब क्या होता है पीपल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिजिनस? इंडिजिनस बेसिकली मींस something that is, yes people, what is indigenous? Anyone? Indigenous. So you can say the indigenous tribes of India. ये बोलते हैं ना हम लोग कि the indigenous people of India. So you have indigenous tribes or indigenous fruit or indigenous vegetable. ठीक है. Indigenous need. So indigenous means something that is inherent. So इसका opposite क्या हो जाएगा? Of course acquired. Now you might wonder how this is the opposite. Indigenous basically means inborn. ये बाहर से नहीं आया है. तो जो हम बोलते हैं ना कि इंडिया में कुछ कुछ ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो बाहर से कभी नहीं आए, वो यहीं पर हैं बहुत सालों से, मे बी मोर देन 15-20,000 years. We don't know how long. So the indigenous tribes of India, whereas the ones who have come from outside, we say that they have come from outside. They are migrants, right? So indigenous का opposite क्या हो जाएगा? Acquired. Acquired means you have taken it from outside. It is not within, from within. ठीक है. Now, one word I wanted to clear is the meaning of the word sterile. Sterile is used in many sense. One thing you have to keep in mind, people, is कि कोई भी word का एक मतलब नहीं होता है. कई बार हम क्या करते हैं ना, आरसीज या पैराजम्पल्स को पढ़ते वक्त हम सोचते हैं कि इसका एक ही मतलब होगा. स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. ये तो इसका मेडिकल मीनिंग है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. हम बोलते हैं ना कि स्टेराइल नीडल लेके आ जाओ, डॉक्टर बोलता है यार स्टेराइल नीडल चाहिए मेरे को. तो स्टेराइल इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. स्टेराइल का एक और मतलब होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस, नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, इनफर्टाइल. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेराइल मेल है. अब स्टेराइल मेल कैसा होगा? ही विल नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और he does not have the quality of reproducing. तो sterile people, sterile men भी हो सकता है और sterile objects भी हो सकते हैं जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है. दोनों इसके मतलब होते हैं. You have to understand from the context कि इसका मतलब क्या होगा. So please understand people कि ये बहुत important चीज है. Whenever the word is used in context, its meaning might change, and therefore you have to always look in what context a particular word has been used. ठीक है. अब यहाँ से थोड़े से difficult questions आएंगे. Quell. Please use your memory and tell me कि quell का मतलब क्या हो सकता है. Yes, what can be the meaning of the word quell? Anyone? Quell करते हैं ना, quell the flame, है ना, quell the flame. तो कई बार ये होता है ना कि जब violence होता है तो the government does something to. So quell का मतलब होता है शांत करना. To calm someone down. I am writing the meaning also. To calm someone down. You quell the crowd, है ना. इनफैक्ट फ्लेम्स को क्वेल करते हैं. So to calm someone or something also. तो आग लगी हुई, आपने पानी फेंका, you are trying to quell the flames. तो quell is the meaning that. Now which word is the exact opposite? Foment. ये foment is not the same as ferment.
फॉर्मेंट एक वर्ड होता है, एक होता है फर्मेंट, ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, फर्मेंटेशन एंड फॉर्मेंट। टू फॉर्मेंट मीन्स उकसाना, आग को, और जैसे वो होता है ना कि भाई यू ट्राई टू डू समथिंग सच दैट आग और भड़क जाए, ठीक है। सो यू आर फॉर्मेंटिंग द इश्यू, फॉर्मेंटिंग द इश्यू मीन्स यू आर ट्राइंग टू create something big out of it. To foment means to keep on fanning in such a way कि आग और भड़के, ठीक है। तो जब आप फॉर्मेंट सामने आता है तो फायर को याद करें कि आग बुझी बुझी सी है, बट यू स्टार्ट फैनिंग इट, एंड एज यू फैन इट the fire starts coming out again. So that is known as fermenting. So to ferment means to incite, to trigger violence, उसका ऑपोजिट क्वेल हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द ऑपोजिट। एंड कॉन्वोक, नाउ ये वर्ड दिखने में आपको थोड़ा सा लगता होगा अजीब सा, लेकिन ये वर्ड आया है कॉन्वोकेशन से। So if you know the meaning of the word convocation, many of you might have graduated and you must have gone to the convocation ceremony to get the certificate. So convocation मतलब क्या होता है कि a meeting place. So to convoke means to meet, to call to meet, ठीक है। To convoke means to call to meet. इनफैक्ट ये आपको कॉन्वोकेशन अगर याद है तो ये वर्ड अपने आप उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं ना कि जिसका मीनिंग आपको शायद हो सकता है आपने कभी वर्ड सुना ना हो, बट बिकॉज समथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इट यू कैन एक्चुअली अप्रोक्सीमेट द मीनिंग। आई यूज द वर्ड अप्रोक्सीमेट बिकॉज क्योंकि हमको मीनिंग पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं क्रीडेंस, एक वर्ड है क्रीडेंस, ठीक है। अब ये जो क्रीडेंस वर्ड मैंने बहुत बार सुना नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि एक वर्ड है क्रेडिबिलिटी, है ना, क्रेड्यूलस, एक वर्ड है इनक्रेडिबल। जब मैं ये सब वर्ड्स को देखता हूं तो आई फील दैट दीज वर्ड्स आर ऑल क्लोजली रिलेटेड, दे मे नॉट हैव द सेम सॉर्ट ऑफ स्पेलिंग। सो इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, तो क्रेडिबल क्या हो जाएगा, बिलीवेबल हो जाएगा कि भाई आपने कुछ जबरदस्त ऐसा कुछ कहा कि जो इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल है। इट इज यूज पॉजिटिवली, बट इनक्रेडिबल इज ऑलवेज यूज पॉजिटिवली। सो अगर मैं ये कहता हूं कि इनक्रेडिबल का मतलब क्या, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, अमेजिंग। दूसरा वर्ड है नॉट क्रेडिबल। तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करें पहले। अगर मैं ये कहता हूं कि यू हैव डन एन इनक्रेडिबल जॉब, आई एम एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। बट इफ आई से दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज नॉट क्रेडिबल, इसका मतलब ये है कि उस पर विश्वास करने, मतलब मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। सो यू मेक अ स्टेटमेंट एंड आई फील कि यार ये बंदा झूठ बोलता है, हिज स्टेटमेंट इज नॉट क्रेडिबल। नॉट क्रेडिबल मीन्स नॉट बिलीवेबल, इनक्रेडिबल मीन्स अमेजिंग, टू गुड। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सो यहां पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, यहां पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, यहां पे इतना अच्छा है कि विश्वास नहीं हो रहा है, और यहां पे विश्वास लिटरली नहीं हो रहा है मेरे को। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है ना, क्रेडिट आपकी, भाई आपकी क्या विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं हम लोग। सो क्रेडिबिलिटी इज समथिंग विच मेक्स यू वर्दी ऑफ बिलीफ ऑफ अदर्स। क्रेडुलस मतलब क्या होता है, जो हर किसी चीज को बिलीव कर ले। सो क्रेडुलस बंदा ऐसा बंदा होगा जो कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनाओ, उसमें विश्वास कर लेता है, बच्चे की तरह होता है, हाँ भाई सही बोल रहे हैं। सो क्रेडुलस इज समवन हु इजीली बिलीव्स इन समथिंग, इनक्रेडुलस इज समथिंग हु डज नॉट इजीली बिलीव इन समथिंग। क्रीडेंस का मतलब होता है कि ट्रुथफुलनेस। देखो मैं आपको इतने सारे वर्ड इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसे ही ट्रिक से आप ऑप्शंस मार्क कर पाएंगे। हो सकता है आपके 6-7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, 2-3 के आपको मीनिंग पता हो, 2-3 का आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये होता है जुगाड़ लगाना। क्रीडेंस मीन्स ट्रूथफुलनेस, द ट्रूथफुलनेस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट यू आर 100% टाइलर एंड इफ यू शो मी योर कैट मार्कशीट एंड इफ यू शो मी योर नेम इन द न्यूज़पेपर, then I will say that the name in the newspaper gives credence to your statement. Did you understand how the word is used? So they are all closely connected. By using approximation technique, you can improve your vocabulary dramatically. ठीक है। एग्रेस, अब एग्रेस जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट इवन आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मुझे पता नहीं था यार एग्रेस कहां से आ गया। तो इसका जब मैंने मीनिंग ढूंढा तो मालूम पड़ा कि एग्रेस मीन्स बेसिकली एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट जो होता है बाहर निकलने का रास्ता इज एग्रेस। तो इसका ऑपोजिट एंट्रेंस हो जाता है। नाउ अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड, आई मीन इसके मुश्किल है कि ऐसा कोई वर्ड आपको मिलेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग, एग्रेस मीन्स बेसिकली ई है तो आप इससे एग्जिट निकालें, ठीक है। एग्रेस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ समथिंग एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंट्रेंस। नथिंग मच कैन बी डन, वी कैन गो टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगेन बोरिंग वर्ड्स हैं, बट बोरिंग वर्ड्स विल कम, समथिंग माइट स्ट्राइक लाइक दिस. पाइड, आपने सुना है पाइड पाइपर, एक मतलब द पाइड पाइपर एक टर्म यूज होता था पोएम्स वगैरह में. सो पाइड पाइपर मीन्स हैविंग मोर देन 2 or 3 कलर्स. सो पाइड पाइपर कैसा होगा कि द पाइपर ही इज प्लेइंग द पाइप लाइक दिस, है ना, ये उसका पाइप है, एंड ही इज प्लेइंग द पाइप एंड द पाइप हैज मल्टीपल कलर्स इन इट, इसलिए उसको बोलते हैं पाइड पाइपर. So when something is pied, that means it has multiple colors into it, more than 2-3 colors. तो उसका opposite क्या हो जाएगा? Solid colored, है ना? And luminosity is what? The brightness of something. Again, it's a very very easy word. ठीक है? So it can be easily understood. ठीक है? Let's go and take the next question. So मैं फटाफट आपको words कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारे words याद रहे. Gainsay. Please people try to find the meaning of the word also. अगर आपको meaning नहीं पता है, try to find the meaning of the word. Tell me what is the meaning of the word gainsay. Gainsay क्या हो सकता है? Yes. Gainsay is to speak against someone. Gainsay क्या होगा? To speak against someone. I'm not writing clearly, but gainsay, to speak against. Please note it down. Gainsay is to speak against someone. तो इसका opposite क्या हो जाएगा? The opposite of that is to speak in support of someone. Correct? People, please understand, difficult word है, not very often used. And gainsay is to speak against someone, and the opposite of that is to speak in favor of someone, है ना? That is the meaning of the word. So I will just clear all the drawings. ठीक है? Complacence. Now I want everyone to just use एक मिनट. एक मिनट. Take the next word, complacence. I mean, I will just. चलो. All of you can see the word. थोड़ा और नीचे करता हूं मैं. अच्छा, अब दिख रहा होगा ना, complacence. आपको मैं थोड़ा सा, आई विल गिव यू द राइट वर्ड एक्चुअली. देखो, ये है कॉम्प्लेसेंट, ये एक वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है. दूसरा वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है. ये एक वर्ड है कॉम्प्लेसेंट. आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स, बट आई होप यू आर एबल टू रीड इट. कॉम्प्लेसेंट है ये एस है और ये सी है, तो कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट, है ना. दीज आर द टू वर्ड्स. और इसी से एक वर्ड आपको निकालना है, तो ये कॉम्प्लाई हो जाता है ना, टू कॉम्प्लाई. और एक अगर मैं देखूं तो कॉम्प्लेसेंस ये है जो अपने को वर्ड दिया हुआ है. अब एक बार ध्यान देना है कि whenever you have a word like this, like patient and patience, तो patient and patience, what is the difference between the two? Of course, ये noun है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है. क्लियर? कैसे पहचाना आपने? जब टी एंड में आता है ना, एक्चुअली वो एडजेक्टिव होता है, और जब वो सी बन जाएगा तो वो नाउन बन जाता है. ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि हाउ टू कन्वर्ट समथिंग फ्रॉम एडजेक्टिव टू नाउन एंड नाउन टू एडजेक्टिव. ठीक है, जैसे आपने कहा माय फादर इज अ वेरी पेशेंट मैन. पेशेंट मैन, मैन इज द नाउन and the patient word is an adjective because of course noun के पहले जो आएगा वो adjective का काम करता है. तो my father is a very patient man. Patient जो word है वो adjective बन गया. He is a man of patience. अब यहाँ पे आपने noun बना दिया because preposition के बाद हमेशा noun ही आता है. noun phrase आएगा, कभी भी आपका adjective नहीं आता preposition के बाद. तो he is a man of patience. My father is a patient man. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लेसेंस है. वर्ड दोनों सेम ही है, खाली फर्क ये है कि दिस इज एन एडजेक्टिव, द वन दैट आई एम एनसर्कलिंग नाउ बिकॉज इट हैज टी एट द एंड, एंड दिस इज अ नाउन. ठीक है, और ये कॉम्प्लेसेंट भी एडजेक्टिव होगा बिकॉज टी है एंड में. अब ये कंप्लाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्लाई? पीपल, आपने यूज किया होगा ना, कंप्लाई करते हैं ना, बोलते हैं कि यू हैव टू कंप्लाई. तो कंप्लाई का मतलब ये होता है कि आप उसको फॉलो करें. हमेशा ध्यान रखना पीपल, व्हेन यू कंप्लाई you are always following something. तो मैं कहता हूं कि भाई if you go to the airport you have to comply by the procedure of security. आप उसको, तो comply का मतलब क्या होता है? फॉलो करना.
किसी को खुश करने के लिए फॉलो करना, ओबे करना। तो कॉम्प्लेसेंट बंदा कैसा होगा? कॉम्प्लेसेंट, हाँ, एक तो होता है कॉम्प्लेसेंट। आपको मान लो कि कैट में मॉक्स में 99.5 परसेंटाइल आने लगा तो टुवर्ड्स द एंड यू बिकेम कॉम्प्लेसेंट। दैट इज सी वाला कॉम्प्लेसेंट। याद रखना प्लीज पीपल, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you are doing very well and you are self-assured of your success, you become complacent. स है वो, sent. And the other is complacent. S है, उसमें z है, ठीक है? This is the way you pronounce these two words, ठीक है? So to complacent means, yeah, self-satisfied, laid back, and complacent means willing to please. याद रखो, willing to please others is complacent. Are we clear now? Willing to please others is complacent. So if I have to give the meaning, I will write it down here. Again, be very clear, people. These are the kind of words that you will come across in your NMAT and SNAP exam. Complacent, that means willing to please, right? इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? Complacent is willing to please. इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? लोग बोलेंगे डिफिकल्टी, ये सब फालतू वर्ड है. Churlish. Churlish means rude. ठीक है? चर्लिश इज रूड. और चर्लिश अगर रूड है तो चर्लिशनेस इज बेसिकली रूडनेस. ठीक है? whenever we add ness towards the end, it becomes a noun. So please understand, there is always a method of converting. There is always a method of converting from noun to adjective, adjective to noun, and from even adjective to verb. जैसे कि यहां पे complaisant था तो हमने कहा कि complaisant क्या होता है? willing to please. ये एडजेक्टिव है. कॉम्प्लेजेंस नाउन है. टू कंप्लाई, ये इसका वर्ब हो गया. ठीक है? टू लगा दोगे तो वर्ब बन जाएगा. हमेशा याद रखना, वर्ब कैसे बनता है? टू लगाने से. याद रखो. सो इफ यू हैव एन एडजेक्टिव, पुट अ नाउन बिफोर इट, एडजेक्टिव बन जाता है वो. इफ इट लुक्स गुड देन इट इज द एडजेक्टिव. इफ इट डजंट लुक गुड, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. ठीक है? कीप ऑल दिस ट्रिक्स इन माइंड, बिकॉज छोटे छोटे एग्जाम जो है ना, एनमैट, स्नैप, ये सब इसी ट्रिक से निकलने वाले हैं. उसमें को बहुत कैट की पढ़ाई नहीं चाहिए. थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा वेल रेड होना पड़ेगा. ठीक है? चलो, एसेट का मतलब क्या है यार? बीकॉम वालों जल्दी जल्दी बताओ, एसेट का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी. ठीक है? इसको लेकर के बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे हम कि सर एसेट लाइबिलिटी का ऑपोजिट कनकर. ओके, ठीक है? आरसी में आता है कि द ऑथर वुड कनकर विद विच ऑफ द फॉलोइंग. द ऑथर वुड, मैं आपको कैट का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और बच्चा क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि उसको कॉन्कर का मीनिंग ही नहीं पता था. द चाइल्ड लेफ्ट, सॉरी नॉट द चाइल्ड, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्वेश्चन बिकॉज ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कनकर. ठीक है? कनकरेंस. ठीक है? नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस मीनिंग इज अराइव्ड एट. व्हेनेवर यू हैव द वर्ड कॉन, it means to come together. That's the reason why if you look at the word conjunction, what is the job of the conjunction? The job of a conjunction is to join something, right? So whenever you see con, जैसे मैंने देखा था, for example, confluence, right? You will say that the city of Prayagraj, or the city of Allahabad, whatever you might call it, is at the confluence of Ganga and Yamuna. Confluence का मतलब क्या? Flow हो रहा है. The river is flowing, right? And con, so they have come together. So the confluence is the meeting point of two different rivers. Similarly, concurrence क्या होगा? The meeting point of opinions. So if you concur, that means you agree, because you are meeting, right? You are meeting point of opinions. Confluence, concurrence, conjunction, conflagration. आग लग जाती है ना, बड़ा आग, एकदम छोटी छोटी आग मिलके बड़ा आग लग गया. कॉन्फ्लगरेशन है ना. मैं लिख देता हूं भैया, बहुत सारे वर्ड दिमाग में आ रहे हैं मेरे, प्लीज नोट करें. कॉन्फ्लगरेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी आग. छोटी मोटी आग कॉन्फ्लगरेशन नहीं होती, पूरा बिल्डिंग जल रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लगरेशन. ठीक है? सो इसका आंसर क्या होगा? डिसेंट हो जाएगा. कॉन्कर मीन्स टू अग्री, and the opposite of that is dissent, to disagree. अब एक और वर्ड है insight. देखो insight जो है ना, मैं फटाफट जा रहा हूं. People, the recording would be there on the channel. You can always watch it. So I don't want to waste time. I want to give you too many words in a very very short span of time, right? So अब देखते हैं, एक वर्ड है insight. Now this, I'm sorry for my writing. The pen is, ठीक है? INCITE. What is insight? And it actually rhymes with insight, है ना?
So incite and incite, अब ये दोनों इनफैक्ट दोनों ऑपोजिट है एक्चुअली. When you so this is a verb, this is a verb, to incite someone, and this is a noun, my insight. I like the insight of business people like Tata and Ambani and all, right? आपने यही कहना है ना कि मैं I like men of insight. दूर की दृष्टि होती है, दूर का देख सकते हैं, वो इंसाइट होता है. INSIGHT. एक होता है इंसाइट, INCIT, उकसाना. सबको पता है ना उकसाना क्या होता है. उकसाना हमेशा गलत ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता. जब आप किसी को उकसाते हो ना, तो आप गलत चीज के लिए उकसाते हो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पीपल. Whenever you actually क्या बोलते हैं उसको, whenever you trigger negative or undesirable behavior in others, that is known as insight. ठीक है. And it is the opposite. Okay, great. हाँ मतलब that is how it is. So हाँ, insight, and what is the opposite of it? The opposite is dissent. All of you have got it correct. कुछ और वर्ड आपको लगता है insight का synonyms क्या होगा? जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ. insight क्या होता है? provoke. provoke हमेशा गलत होता है. You provoked me to go and fight with someone. The speech of the leader provoked the crowd. है ना? Provocation is a noun form. ठीक है. To provoke उसका noun form provocation है. ठीक है. To provoke is a verb. The noun is provocation. ठीक है. There is no adjective form unless you make it provoked. ठीक है. और क्या होता है? इंसाइट हो गया एक. There is एक होता है इवोक. लोग मुझसे पूछते हैं सर कि ये इवोक और प्रोवोक का फर्क क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोक एंड प्रोवोक? नाउ लुक एट द डिफरेंस. प्रोवोक मीन्स टू ट्रिगर समवन फॉर अ नेगेटिव थिंग. इवोक मीन्स जगाना अच्छे चीज के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि नाउ यू ऑल आर इनटू योर 20s. इफ यू सी द photograph of your own self when you were 4 or 5 years old, can I say it evokes memories of childhood? या आपने अपने बचपन की कोई राइटिंग देख लिया, बचपन में आपने अपना स्कूल का फोटोग्राफ आता है ना, या स्कूल का बैग देख लिया है, कपड़े देख लिए बचपन के छोटे छोटे, तो आपको सब मेमोरीज आ जाती हैं. तो कैन आई से इवोक मींस जगाना फ्रॉम विद इन. प्रोवोक मींस बाहर से. टू ट्रिगर फ्रॉम आउटसाइड फॉर अ रॉन्ग थिंग इज नोन एज प्रोवोकेट, टू प्रोवोक. एंड टू इवोक मींस टू अवेकन फ्रॉम विद इन. सो ब्यूटिफुल moonlit night will evoke some sort of poetic feelings in you. Are you getting my point? I hope this is clear to everyone. I will not elaborate too much on all these words, but these are the subtle ways by which you can remember words for a longer period of time. Amalgamate, ये बहुत common है. Amalgamation, mergers and acquisitions अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि amalgamate means coming together. Amalgamation is what? The coming together. याद रखना. So when you amalgamate, you basically bring things together. तो congregate तो नहीं होगा उसका opposite, उसका तो similarity हो जाएगी ना. So the word, I'm sorry here. The word amalgamate is coming together, and therefore congregate is not the answer because वो भी coming together ही होता है ना. Congregation, मैंने कहा था ना, con plus aggregate. Aggregate मतलब क्या? सब कुछ जोड़ो. Con plus aggregate, congregate, people coming together. It was a huge congregation. So बोलते हैं कि कुंभ मेला is the biggest human congregation, है ना? People coming together. Insulate, isolate हो सकता है ना. Amalgamate, can I say is it isolate or insulate? Isolate होगा because isolate means keeping away. Amalgamate means to merge. Insulate is to protect. If you ask me why not insulate, I would say the word insulate is with respect to protection, not separation. You might keep things very close, but yet there would be an insulation in between. So the idea of insulation is protection and not isolation. ठीक है? चलो बढ़िया है. So amalgamation, you know the answer, that is isolation. Let's go and take the next word. अरे यार, ferrous, सब engineer science पढ़ने वाले. Ferrous, yes, ferrous means affected by iron, containing iron, ferric. तो फेरिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंटेनिंग नो आयन. बहुत सिंपल है. इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉट विलिंग टू रिएक्ट विथ एनीथिंग एल्स. ठीक है, ये इसका मतलब होता है इनर्ट. फ्लेग्मेटिक, हाँ, इसमें बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं. ये टिपिकल एप्टीट्यूड, टिपिकल जीआरई सैट
एंड कैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चन। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है? चलो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ फ्लेगमेटिक का मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेगमेटिक? I will give you, there are four words which sound very similar. Okay, I will just tell you how these words come so that you have more words. एक होता है uh, melancholic, है ना? My spelling might be wrong. ये है melancholic, है ना? एक होता है choleric, है ना? और ये sarcastic जैसे लोग बोलते हैं, वैसे अलग अलग इमोशंस होते हैं। ये होता है phlegmatic. So phlegmatic means calm. इनफैक्ट काम ही नहीं होता वो, उसका नेगेटिव मीनिंग है इमोशनलेस, फीलिंग्स ही नहीं है, डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स, दैट इज नोन एज फ्लेगमेटिक। मेलंकोलिक मींस ऑलवेज डिप्रेसिव सैड। कॉलरिक मींस ऑलवेज इजी टू गेट इरिटेटेड। कॉलरिक टेम्परामेंट किसका होता है? जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, गुस्सा आता है, इजीली गेट्स एनॉयड, है ना, उसको कॉलरिक बोलते हैं। कॉलरिक कॉलरिक क्या बोलते हैं? choleric temperament, that is the right way. So someone who gets easily irritated, disturbed, annoyed, or even bad tempered, choleric बोलते हैं। melancholic always depressive, उदास एकदम हमेशा, sadness, हर कोई दिख रहा है उसको मरता हुआ। फ्लेगमेटिक क्या? काम, एकदम कंपोज, मस्त रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, अच्छा हो खराब हो, ऐसा वैसा, फ्लेगमेटिक। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर? वैलिएंट तो नहीं होगा। वैलिएंट इज विद रिस्पेक्ट टू फियर। देखो वैलिएंट वर्ड जहां पे फियर आता है वहां पे वैलिएंट आएगा। ये होता है वाइवेशियस। वाइवेशियस मींस रिफ्लेक्टिंग इमोशंस, वाइवेशियस बोलते हैं ना हम लोग। अभी आपको बोलता हूं मैं इसका यूसेज कैसे होता है। देखो वाइवेशियस वर्ड जो है ना, ये कभी भी यूज होता है फॉर द फेयर सेक्स। व्हाट इज फेयर सेक्स? पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए, पर्टिकुलरली यूज होता है फीमेल्स के लिए, एंड स्पेसिफिकली व्हेन दे आर वेरी lively when they talk. So some females when they talk, particularly in speech, they are very very lively. So someone who speaks in a very lively way, particularly a female, that person is called vivacious. है ना? तो लोग बोलते हैं यार क्या चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। जब आप बोलते हो ना चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, यू मीन टू से यार ये फ्लेगमेटिक है, इमोशन ही नहीं है। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वाइवेशियस। इमोशंस ही इमोशंस है, फीलिंग्स ही फीलिंग्स है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, एकदम बबलीनेस है, तो उसको बोलते हैं वाइवेशियस। ठीक है, याद रखना है पीपल, दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स। सो इफ यू हैव समवन लाइक दैट इन माइंड, यू कैन कॉल दैट पर्सन वाइवेशियस। ठीक है, 5 क्वेश्चन और, 6 क्वेश्चन और है, सेशन पूरा खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिजियस? प्रोडिजियस का मतलब होता है anyone, what is prodigy? I will use the word, देखो आप लोगों ने वर्ड सुने हुए हैं लेकिन आप भूल चुके हो। जैसे मैंने कहा था, if something ends with T in the initial part of the session, I have said that often if something ends with T, it becomes an adjective. I gave example of patience and patient, perseverance and perseverant. So when you put T, it is an adjective. Similarly, जब OUS आता है ना कभी भी, एक मिनट मैं वापस निकालता हूं, टी आया तो पेशेंस है। व्हेन यू सी द वर्ड OUS टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनी वर्ड, वो उसका मतलब है इट्स अ क्वालिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आउटरेजियस, आउटरेजियस कमेंट्स वेर मेड बाय द पीपल, तो ये OUS है, इट मींस दिस इज एन एडजेक्टिव। प्रोडिजियस मींस दिस इज एन एडजेक्टिव। आउटरेजियस एडजेक्टिव है, तो नाउन क्या है? आउटरेज है। Prodigious is an adjective. So what is the noun? Prodigy. Mozart could play and compose at the age of 5 or 6. People called him, he's a child prodigy. Prodigy means unusual, abnormal, positively abnormal, not negatively abnormal. Someone might go and murder someone at the age of 5. That is not as that's not prodigy. Okay? So prodigious means unusual, positively unusual. So अगर prodigious वो है which is big and huge, then what is the opposite of it? देखो यहाँ पे आपको opposite पकड़ में नहीं आएगा, but prodigious means huge. जैसे I have a prodigious memory. So Swami Vivekanand had a prodigious memory.
He could just read a book and remember it word by word. So can I say it's a prodigious memory? Prodigious means huge, बहुत बड़ा, unusual, abnormal भी होता है उसका मतलब. इसका आंसर slight हो जाएगा. Slight means small in amount. So prodigy is way ahead of his time. Slight is so it is the opposite. No other word is premature. Opposite नहीं होता उसका. People might say sir premature क्या होगा? Premature is basically before the right time. This is known as time period. Prematurity हमेशा time के हिसाब से होती है ना? तो premature means yet to mature, उसके पहले ही हो गया. Premature baby होता है ना? So prodigious is not equal to premature. Prodigious with respect to size, बहुत बड़ा, unusual, big, huge, and that's the reason why slight is the right answer for that. Slight means small. ठीक है? क्लियर एवरीवन? मजा आ रहा है. चलो भाई, अब नेक्स्ट करते हैं. एक वर्ड जो मुझे बार बार आरसी में दिखता आया है, मेनी टाइम पीपल हैव टोल्ड मी सर इसका मीन द वर्ड इज corroboration, and I will tell you what is to corroborate, है ना? What is to corroborate? In fact, in the RCs, I have seen this word very frequently. Which of the following corroborates the author's point of view? So to corroborate means to support. याद रखना, to corroborate means to support. Keep this in mind. Okay, so when you corroborate something means you support something. So what is the answer? Corroborate means support. What is the answer? Corroborate. देख लेता हूँ. Difficult. Corroborate. So utility, certainty, generality. Implausible also people mark. Implausible means difficult to believe. ठीक है? Implausible is not impossible. It is difficult to believe. है ना? Corroboration is utility weakening of. Utility क्या होता है? Usage of something. So that is not the right answer. Corroboration is confirmation. I will tell you. भाई कहीं मर्डर हुआ, पुलिस वालों ने देखा यार ये बंदा बोल रहा है घर पे नहीं था. I'm using हिंदी so that you understand. कहीं पे मर्डर हुआ, पुलिस वालों को शक हुआ किसी पे, पुलिस वालों ने बोला यार लगता है ये बंदा, मतलब ये बंदा बोल रहा है कि मर्डर नहीं किया इसने, बिकॉज ये था ही नहीं वहां पे. The police goes to the nearest CCTV areas and they search the CCTV footage, and that guy was seen going out of that place. So can I say the CCTV footage is actually corroborating the statement made by the person? So to corroborate means to confirm or to strengthen. समझ में आया कि नहीं? To corroborate means to confirm or to strengthen, particularly a theory. जैसे आपका कहना है कि after the age of 30 people lose their interest in learning new things. अब तो आपने बोल दिया करके, आपको लगा दिमाग पे, आपने बोल दिया. How would you corroborate this? So you will go and do a research. You will do some sort of survey and you'll talk to people. You will get the stats and the data, and then the data will come and corroborate your theory. So to corroborate means to confirm, or the opposite is lessening of certainty. ठीक है? Because corroboration is always with respect to confirmation, to make something certain. पक्का हाँ हुआ था. So corroboration means to confirm. The opposite is lessening of certainty. समझ में आया कि नहीं? Utility की बात नहीं हो रही है. And generality, I don't know how it is. ठीक है? Certainty is more correct with respect to corroboration than generality. Implausibility is with respect to belief. ठीक है? You might find something implausible because you are ignorant of something. जैसे आपने कहा मुझसे कि you know something has happened and that person has come back to life. Implausible. Implausible means what? Almost difficult to believe. ठीक है? This is the right answer. So let's go and take the next question. Palpable. Very nice word. Oh, palpable means देखो एक word होता है tangible. बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता.
tangible and intangible. If you have done commerce, I think you will know कि tangible intangible क्या होता है. Tangible assets क्या होते हैं भाई? Tangible asset वो होता है जो आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल है building, machinery, all these are tangible assets. What is intangible asset? The goodwill of the organization, the brand value, all these are intangible. It's difficult to go and see it and touch it and feel it. So palpable means tangible होता है. Palpable is tangible, and if you make it noun, it becomes palpability, and this becomes tangibility. So if palpability is equal to tangibility, the opposite would be intangibility. What is intangibility? The intangibility of certain abstract things. जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई कुछ आरसी से बच्चा बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चे को उसको समझ में नहीं आ रहा है. क्यों? बिकॉज इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है. Philosophy, RC passages are intangible. Sociology passages are intangible. Science is more tangible. That's the reason why if a science passage comes in the exam, most of you would be very comfortable because it is tangible. You can see it, you can feel it, and you have seen it before. Inflammable क्या होता है? जो easily आग पकड़ लेता है. Highly inflammable लिखा होता है ना किसी टैंकर्स के बाहर. Intractable. Now, tract, ठीक है, and tractable. ट्रैक्टेबल मींस जिसका ट्रैक आप जिसको है ना आप ट्रैक करके पकड़ सकते हो. देखो, लर्न द मीनिंग, गेट द मीनिंग फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ. व्हेन समथिंग इज ट्रैक्टेबल, इसका मतलब क्या है? उसका एक ट्रैक है, उसको ट्रैक को आप ट्रैक करके पकड़ सकते हैं. इनट्रैक्टेबल मींस व्हाट? डिफिकल्ट टू मैनेज. सो ट्रैक्टेबल क्या होता है? इजी टू मैनेज. ट्रैक्टेबल इजी टू मैनेज, इंट्रैक्टेबल डिफिकल्ट टू मैनेज. और कैसे याद करना है अपने को? ट्रैक बनाओ. ट्रैक्टेबल मतलब क्या? जिसको हम ट्रैक से फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं. इंट्रैक्टेबल इज व्हाट? समथिंग दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड. Okay, are we clear about it, people? This is the way we have used this word. 3 more questions, 18, 19, 20, फिर छुट्टी हो जाएगी. खत्म कर देता हूं यार इतने. Alacrity क्या होता है? Alacrity is basically, I like this word. Alacrity is curiosity, eagerness, कुछ करना है. Some people, I like their alacrity. Why? Because their willingness. कई बार ऐसा होता है ना कि you want someone's help. आपको रास्ता भूल गए, आप मोबाइल फोन नहीं है, आपने रास्ता पूछा किसी से, बंदा आके बड़े इन्वॉल्व होके आपको बता रहा है, यहाँ से लेफ्ट लो, वहां से राइट लो, आगे से देखना, ध्यान देना, वहां से लेफ्ट मत लेना, राइट ही लेना. सो व्हाट डज ही शो? ही शोज दैट देयर इज विलिंगनेस टू हेल्प. सो alacrity is what? Willingness to help. You like sales people in certain showrooms because you like the alacrity of the salesperson. He's willing to help you in every possible way. He's giving you more information. He is also cracking jokes. He's, understanding your requirements. He's also probing a lot. So alacrity is willingness to help. इसका opposite क्या हो जाएगा? इसका opposite है hesitation and reluctance. In fact, alacrity is willingness to do good. ऐसा नहीं है. Willingness to do harm भी होता है. Alacrity is willingness to do good. Reluctance is unwillingness. याद रखना. ठीक है, चलो. Skepticism is doubting something. Doubting if something is not possible. और cynicism क्या होता है? Cynicism का मतलब होता है the belief that the entire world is selfish. Cynicism का मतलब होता है कि लोग अच्छे नहीं हो सकते. अगर अच्छे हैं तो उनका कोई ना कोई selfishness छुपा हुआ है. ठीक है? So if you are cynical, if your friend is cynical, इसका मतलब ये है कि he always sees people as selfish and self-centered. No one can be selflessly good. ठीक है? Because the cynic people, the cynics always feel that no one can be selflessly good. ठीक है, तो उसको बोलते हैं cynicism. Nice word actually. बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, इसका सही मतलब नहीं पता उनको. Cynicism and pessimism are not the same thing. Pessimism एक hope को लेके होता है. याद रखो, pessimism, optimism उम्मीद को लेके होता है. You are pessimistic and optimistic with respect to the future, not with respect to people. CAT results will not be good. You are pessimistic. But this guy is calling me today after a long time. Definitely, I think he is in need of something. ये cynicism है. Did you get it now? Cynic people doubt the intention of others. And pessimistic people, they are always looking at the negative side of possibilities. ठीक है? Outlook हमेशा negative होता है with respect to the future.
So I would rather be a pessimist than be cynical, because cynical is it's more undesirable. Pessimism ठीक है, एक बार accept भी कर सकता हूं मैं. Cynicism is always a bad quality to have. Mannered, है ना? Can anyone? Now this is a logical question. This is not a question based on vocabulary. Mannered means cultivated, है ना? You learn manners. You're not born with manners. Yes or no? So he's well mannered. That is, he has been really taught good manners. इसका opposite है natural. Mannered is the exact opposite of natural. What is natural means it has not come from outside. And what is mannered is it has been cultivated by society and by circumstances. Infant is a noun and infantile is an adjective. Now you might ask, ऐसा इसका मतलब क्या होता है? Infantile क्या हो सकता है? What could be the meaning of the word infantile? Infantile basically means childlike. Infantile curiosity. मतलब बचकाना. ठीक है? That is the meaning of the word infantile. Lots of other meanings are there in psychology, in sexuality. Infantile has many meanings, but one thing is concerned with infant. ठीक है? You can look for the other meanings as well. The last question is dissemble. Now I will tell you what is dissemble. To dissemble means to basically hide your feelings, hide your true feelings. This one is dissemble. Dissemblance, है ना? जो what is there inside, you try to hide it. That is known as dissemblance. ठीक है? And so what could be the opposite of it? To behave honestly. Dissemblance is always there with respect to emotions and feelings. People do that because they want to hide their real feelings and emotions. So dissemblance is the exact opposite of being very honest and genuine with respect to your emotions and feelings. This is the way we basically separate the two words. ठीक है? So मैनर का ऑपोजिट इग्नोरेंट नहीं हो सकता. मैनर का ऑपोजिट बेसिकली होता है कल्टिवेटेड, लर्न फ्रॉम. इग्नोरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज एंड मैनर्ड इज अडॉप्टेड. सो ignorance word is always with respect to knowledge. You know or you don't know. That is where ignorance comes. But when you say mannered, it means basically something that has been adopted. Are we clear, everyone? So people, I hope you have liked this session. Please write your feedback here, because मैंने बहुत सारे word ले लिए. Almost, I think it's a 55 minutes long session. But the idea is that, the idea is to get more words, because it is not that one session will make a difference like this. But if we start doing things like this in a series of sessions, I think most of you will then get a real feeling of how this is. ठीक है? So I think it's a inhibition. It could be dissemble means to hide your emotions होता है, and inhibition means basically to suppress it. Actually dissemble क्या हो? दिखाना नहीं किसी को जानबूझ के. You know, I have to see. You have to be very, very good with respect to using words. Inhibition में शायद आपको पता भी नहीं है. समझ में आ रहा है? Yeah, this is the first session. Inhibition में आपको शायद पता भी नहीं है कि आपने अपने अरमानों को दबा के रखा हुआ है. Society might have, done that, and that's why you have suppressed your emotions. You don't know. But dissemblance is always done consciously, deliberately. You want to hide because you want to cheat others, or maybe you don't want to show others. So dissemblance is done by the person deliberately, whereas inhibition is basically subconscious, unconscious, without realizing. This is the major difference between dissemblance and inhibition. Are we clear, everyone? ठीक है? So I hope you like the session, है ना? And we will have such similar sessions. Okay, people. So thanks a lot, and I would like to end this session now. ठीक है?